Windows Alter. Yes, it started the recording. Chalo. So once again, good evening all of you. So my dear friends, from today itself we are going to start with one of the very interesting topic, one of the hot topic in the industry nowadays, that is API testing. So the basic thing is what exactly API is and what is the need of testing that API. But before understanding that, I'm expecting the answer from you, huh, guys. Before understanding that API and all those things, uh, basically, what is mean by testing tools? I'm not questioning that which are the testing tools. Basically, I'm asking what is mean by testing tools. Okay. Anything else? Hmm, 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 hmm. Okay. Guys, just one sec. You are answering. I think you people are trying to answer API. I'm not asking about API. I'm asking about what is mean by testing tool. The tools those we are using in testing. So like we are using Selenium, we are using Cucumber, we are using Jira, we are using this RPM. You know? So what these all tools are? What are these all tools? Basically, what is mean by tool? When I start with Selenium, all of you have joined my Selenium batch, so you might knowing that is the point which I discussed in the very first session. So testing tools means these are the softwares. Basically, these are the softwares those we are using in the entire testing part. Now, in this case, again, we are having two types of tools. Rather, three types of tools are there. What are those? So, first one is automation testing tool. Rather, this is the third one. Okay, first one is we can say test management tool. Then second आता है defect tracking. Sometimes it is also known as defect management tools. And third part comes into the picture, that is automation testing tool. You know it very well. Test management tool. When I talk about test management tool, we are having the tools like Jira, you know, then TestLink, QC. These are some of the test management tools. When I talk about defect management tool, again QC comes into that picture. Jira comes there. Bugzilla is there. So these are some of the defect tracking tools or defect management tools. Talking about automation testing tool. Now here in automation testing tool, again we are having some different categories. Okay, so like one is we can say functional testing tools. Now when I talk about functional testing tool, we are having Selenium, you know, we are having Cucumber, we are having Test Engine. Although these are the frameworks, but those are the tools again. Sorry, Test Engine. We are having Tosca. So these are the functional testing tool. Then second comes into the picture, that is non-functional testing. Now in non-functional testing tool, again we are having so many number of options available. Okay, so for functional test, sorry, for performance testing we are having JMeter. For security testing we are having web scrap like tools. So for every purpose we are having the different tools available, right? Some tools, HP web scrap or something like that, right? And third part comes into the picture, which is the hot topic in the testing industry, and that is nothing but your
API testing tools. API testing. So in that we can talk about Postman, RESTful API, and SOAP and all those things that we can discuss here. So guys, when we talk about a functional testing tool, uh, we people are obviously familiar with the Selenium, for a non-functional tool or for performance testing we are having this tool called as JMeter. For talking about uh, uh, security testing we are having WebScrap. Suppose we want to do some compatibility testing, again we can use Selenium tool or Browsera. Browser shot are the tools basically designed for compatibility testing, right? So these we can say some of these tools. Although we are performing the testing only, you know, here what we are doing with the help of these tools, we are trying to do some testing part, but process is completely different. Like performance testing comes at the backend side. मी करतोय, तुम्ही पण करणार असाल तर करा, काही प्रॉब्लेम नाही. मी पण करतोय, नाही तुम्ही पण करा, काही अडचण नाही, तुम्ही पण करा, कारण कदाचित माझं डिस्कनेक्ट झालं तर परत प्रॉब्लेम आहे नको है ना. सो खुद ही रिकॉर्डिंग दोघा तिघांच्याकडे 2-3 लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो कुछ मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं. सो नाही नाही इथं येत नाही, यू हॅव टू यूज सम एक्सटर्नल टूल्स. इथं ह्याच्यामधनं रेकॉर्डिंग नाही होत ते. हा ते ह्याला होतं ना ऑप्शन, आपला काय म्हणतो आपण, स्काईपला होता तो ऑप्शन, इथं नाही आहे. हा स्काईपला रेडीमेड ऑप्शन, झूमला पण आहे. इथं एक कीबोर्डवरचा शॉर्टकट आहे, विंडोज अल्टर आर. विंडोज अल्टर आर will give you one inbuilt recording tool which is already started out at my end. मैंने ऑलरेडी उसको रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके रखा हुआ है. ओके. सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहाँ पर आता है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग कम्स एट द बैक एंड साइड. मतलब वो कैसे चल रहा है हमें पता नहीं चलता. सो whatever request we are passing to the server and how server will respond to you means within how much time the server will respond to you. So this is where testing in the performance testing, if I'm not wrong. Here Vaishali and Poonam are the, I can say, the master in JMeter, so those are much more familiar with the JMeter. So actually what we are going to test in the JMeter means any one of the performance testing tool. So हम क्या कर रहे हैं, we are sending the request to some specific functionality, है ना, and we are checking that कि how much time it is taking to serve that particular operation, है ना. ये हम करते हैं फंक्शन परफॉर्मेंस टेस्टिंग में, जैसे JMeter है या फिर लोड रनर है, ऐसे टूल्स में हम यही करते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पर ये होता है. नाउ ये हो गया आपका. अभी फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में तो आई डोंट थिंक आई नीड टू टॉक मोर अबाउट दैट, है ना. मतलब वी आर टेस्टिंग द, जनरली वी आर टेस्टिंग द UI ऑफ दैट एप्लीकेशन, फंक्शनल UI, है ना. जैसे हाउ योर टेक्स्ट बॉक्स इज वर्किंग, हाउ योर लिस्ट बॉक्स इज वर्किंग, हाउ योर कॉम्बो बॉक्स इज वर्किंग, ऑल दोस थिंग्स. नाउ API क्या होता है? सो एज आई सेड, अभी मैंने कुछ समय पहले भी ये बताया था कि API इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक इन द इंडस्ट्री. वेरी, मतलब क्या बोलते हैं हम, पॉपुलर, वेरी बूम. मार्केट में अभी API का बूम चल रहा है. सो इट इज अ बूम, इट इज अ हॉट टॉपिक इन द इंडस्ट्री नाउडेज. सबसे सबसे बड़ा बूम ये चल रहा है कि API. ये अभी देखो the people like me are much more happy with these technologies, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो नए नए स्टूडेंट्स मिलेंगे हमें. ओके चलो, जस्ट किडिंग.
सो एपीआई का एक ये है कि इवन एज अ फ्रेशर you should know the at least basics of API, and fortunately most of you are much more experienced, okay, in testing, in maybe only I think Shweta is not having the experience in testing, although she has worked somewhere, working somewhere, but that part is some non-technical part, but soon she will again join to technical part, no doubt about that. But so everyone should know, even as a fresher, as a experience, you people should be aware about the technology of API, at least the basic part of the API. Okay. Let me clear one thing, guys. This is little bit vast content. ओके एक चीज आपके मन में ठान लो कि एपीआई टेस्टिंग ये थोड़ा सा वास्ट पार्ट है। गाइज मैं खुद आई थिंक कुछ एक साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तब जाके मैं आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट कि नाउ आई कैन टेक अ बैच। ओके, और फॉर्चुनेटली मेरा पहला ही बैच है। होप यू गाइज विल एडजस्ट मी अगर कुछ होता है तो। सो इसीलिए तो मैंने इसका अलग से पब्लिसिटी नहीं किया है कि नए स्टूडेंट्स के लिए, तो पुराने स्टूडेंट्स को ही क्या बोलते हैं हम उसको, उन लोगों को पकड़ पकड़ के ला के बिठाएंगे क्लास में और उनके ऊपर ये ठोक देंगे कि ये है। ओके, सो दैट इज द रीजन। ओके, सो पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि ये लिटिल बिट वास्ट कंटेंट है। ओके, एंड सिलेनियम के जैसे, मतलब ऐसे सिलेनियम में कैसे होता है कि आपको आपको दिख रहा है। सिलेनियम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सिलेनियम वेब ड्राइवर अगर हम बात कर रहे हैं, तो सिलेनियम वेब ड्राइवर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यू पीपल कैन सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड, सॉरी, ऑन द स्क्रीन, नॉट बिहाइंड द स्क्रीन। जैसे आपने कोई स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दिया तो आपको वहां से फटक से पता चलेगा कि यार हाँ, ये इट इज वर्किंग लाइक दैट। सो यहाँ पर एपीआई का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हो आप कि यू पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, है ना। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हैं। ओके, सो मेनी थिंग्स आर देयर कि लाइक यू कैन डू द प्रोग्रामिंग विथ एपीआई टेस्टिंग। हाँ, ये भी एक चीज है कि एपीआई टेस्टिंग में आप प्रोग्रामिंग का पार्ट भी कर सकते हो। गाइज, एपीआई टेस्टिंग में देर आर टू मेजर पार्ट्स आर देयर। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। नाउ जैसे देखो सिलेनियम में क्या होता है, सिलेनियम का एक एक बहुत बड़ा वी आर हैविंग द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि सी what is the highest part in the selenium। मतलब ऐसे नहीं है कि सिलेनियम में स्काई इज द लिमिट। जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर दिस टेक्नोलॉजी स्काई इज द लिमिट, नहीं, सिलेनियम में ये नहीं है। सिलेनियम में आपको पढ़ना क्या है, यू आर सपोज टू हैंडल मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। इससे ज्यादा क्या होगा सिलेनियम में, मुझे बताओ आप लोग। हाँ, आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लिस्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन्स है, लिंक्स है, टेबल्स है, मेनूज है। इससे 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 अलग क्या है? नथिंग, है ना। हाँ, साइट अलग अलग होगी। सो द मेजर थिंग वहां पर आपको किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है? वहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है लोकेटर्स के ऊपर। so whatever locators we are having, the methods which we supposed to use, and जो पार्ट हमें ऑटोमेशन करना है उसके लिए कैसे कैसे उसको करेंगे, तीन चार चीजें हो गई तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एपीआई में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है कि हियर वी आर सपोज टू सेंड द रिक्वेस्ट। नाउ देयर आर 4-5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड्स। सो वहां पर गेट मेथड अलग से है, पोस्ट मेथड अलग से है, पुट मेथड है, डिलीट मेथड है ना। सो ये रिक्वेस्ट है सारे के सारे। सो ये कैसे हम हैंडल करेंगे? अब ये एक एपीआई के बारे में हो गया, कुछ दूसरा एपीआई है तो वहां पर शायद नहीं, मेथड तो यही रहेंगे लेकिन उसका फंक्शनलिटी में पॉसिबल कुछ अलग हो सकता है। so, वहां से रिस्पॉन्स कुछ अलग आ सकता है। सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर वी आर सपोज टू कवर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि API testing is little bit vast comparing to the Selenium. Okay,
सो ये तो एक पार्ट ये हो गया. मैंने ये भी चीज़ बोला आई थिंक कि वी आर सपोज टू डू सम प्रोग्रामिंग पार्ट, मतलब ऑटोमेशन में जब हम जाएंगे, रेस्टफुल एपीआई जब हम देखेंगे, एट दैट टाइम वी आर सपोज टू डू सम स्क्रिप्टिंग एज वेल. Here again we are supposed to use some JSON protocol. सो जेसन कैसे होता है, कैसे दिखता है, उसका भी हम थोड़ा सा रिव्यू कर देंगे कि जेसन क्या होता है. So in this entire course, what actually we are going to understand कि the basic part of API, and the, as I said, for API testing sky is the limit. So at least we'll try to understand the basic part of API and the API testing. Okay. सो जनरली क्या करेंगे हम. सो हम सबसे पहले तो पोस्टमन देखेंगे कि हाउ वी कैन डू दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ पोस्टमन, कि जिसको हम बोलते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग. क्योंकि देखो it is not possible that you can you can do the API testing manually. So there are so many limitations on that. So उसके लिए हमें क्या करना है, as a manual tester, then here we people are supposed to use some tools in the market, like Postman is the one of the popular tool for that. Okay, we are going to understand this tool as well. Using these tools we can do the API testing. So as I said, Postman हम यूज करेंगे if possible. आज के सेशन में विल ट्राई टू इंस्टॉल द पोस्टमैन, बट आई एम नॉट श्योर कि आज होगा नहीं होगा, क्योंकि आज का सेशन मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ. ओके, सो देखते हैं क्या हम कर सकते हैं. राइट. सो द पोस्टमैन का सेशन देखते हैं कितना हम कर सकते हैं. इट इज़ अ फ्री टूल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनुअल टेस्टिंग. ओके, चलो. Now this is the manual part. कौन सा? Postman वाला is the manual part. Now what if you want to do the automation for this? Okay, no problem. So for automation testing, we are having some tools for the API as well. That is also possible. So when I talk about this automation testing tool, there are some libraries available. जैसे हमारे पास Selenium WebDriver की library थी. In the same way, we are having the REST API, REST, REST API करके एक library है that we are going to understand. ठीक है, चलो. So actually what we are going to cover in this 10 hours or 12 hours का course. So first we will try to understand what is API. Then क्या देखेंगे? Okay, what is API testing. Then we'll see role of tester in API testing. Okay, and methods of testing. So here we are having two methods. So one is manual testing and second one is the automation with the help of REST API या फिर RESTful API भी बोलते हैं इसको, and manually with the help of Postman. Okay. So this is the complete agenda for our course. Now guys, let's try to understand first, as we are going to understand the API testing. So first thing, let's try to understand what is meant by API. So API होता क्या है? Does anyone knows the full form of API? I think everyone knows that API stands for, correct. So it stands for application programming, not packaging. Programming interface. बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. So let's ये actually before understanding the API, first let's try to understand the client server architecture.
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसका मैं बेसिक पार्ट, जो दोज पीपल हु हैव जॉइंड माय मैनुअल टेस्टिंग बैच दोज नो दिस, क्योंकि वहां पर मैं इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बता देता हूँ कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्चुअल में होता क्या है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्चुअल में क्या होता है। ओके, एक बेसिक, बहुत ही बेसिक का मैं पार्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। दोज हु आर completely न्यू, दोज विल एंजॉय, बट दोज हु हैव joined my batch earlier मैनुअल टेस्टिंग का, उनके लिए ये शायद बोरिंग पार्ट रहे। चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा कोई भी सेशन नॉर्मली वैसे तो बोरिंग नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो we are talking, we are discussing about, just imagine कि there is a bank, देर इज अ लोकल बैंक। एक लोकल बैंक है, कोई भी XYZ करके बैंक है, एंड इन दैट बैंक वी आर हैविंग दिस 4 counters for the cash transaction. We are having these 4 counters. So the customer can go to any counter and they can withdraw or they can deposit the cash. So this is counter number 1, 2, 3 and 4. Now suppose uh, here Shweta is having 50,000 balance on her account. So there is a 50,000 balance on her account. Now tomorrow what she is going to do, on this counter number 1 she will go to counter number 1. What is the balance? So she is having the balance of 50,000. She is having the balance of 50,000. Now what she is going to do, she is going to withdraw 10,000 rupees. So now what is the balance in her account? So obviously the balance is 40,000. Correct guys? So the current balance in her account is 40,000. Now day after tomorrow she is going to the same bank, but now she is joining, she is again withdrawing the 10,000, but not from this machine, not from this counter. Now she is switching because this counter is bit busy. So she switched to this second counter. अभी देखो, what do you think कि यहाँ पर बैलेंस क्या होना चाहिए? श्वेता का बैलेंस क्या होना चाहिए? वैसे तो ये मतलब ये उसके बैंक का मिनिमम बैलेंस है बैलेंस क्या होना चाहिए श्वेता का? Yes, guys, what do you think? 50,000, 40 होना चाहिए, होना तो चाहिए 40, है ना? होना तो चाहिए 40,000, लेकिन लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर उसका बैलेंस होगा 50,000। श्वेता हैप्पी? ओके, सो उसने क्या किया, यहां से फिर से 10,000 विड्रॉ कर दिया। नाउ हर बैलेंस इज अगेन 40,000। कल कल जाके उसने ये काउंटर से फिर से 10,000 निकाला, फिर ये काउंटर से 10,000 निकाला। So still she can withdraw 5 times more. So कितना कितना अमाउंट देखो वो विड्रॉ कर सकती है ना? So this is a problem. This is a why this problem is happening, because all the data, whatever data is there, the data is getting stored on these individual machines. मैं बहुत ही बेसिक लेवल का आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बता रहा हूँ. So this is what happening. So in that case what we can do, we can put one server. यहाँ पर ना मिडल में क्या करेंगे कि एक सर्वर बनाएंगे. अब ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर will store all this information. जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है, whatever data you people want to store, all the data will be stored on this server, and whenever it is required, all these 4 counter machines are now connected with this server. So अभी क्या होगा, अभी सपोज तो बैलेंस यहाँ पर स्टोर होगा ना आपका बैलेंस 50,000,
नाउ इफ शी इज गोइंग टू विड्रॉ 10,000, सो बैलेंस यहाँ पर होगा 40,000. अभी आप इस मशीन से भी चेक करोगे तो यू विल गेट द बैलेंस 40,000, यहाँ से भी 40,000, यहाँ से फ्रॉम एवरीवेयर यू विल गेट दिस 40,000 बैलेंस. ये है अ वेरी बेसिक लेवल का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो दिस इज द सर्वर वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर सम डेटा. We are going to store some data on this server, and these are the 4 client machines via which we are trying to fetch, or we are trying to communicate with that server. Okay, so यहाँ से हम request भेज रहे with the help of this server, with the help of this client machine. I'm going to send some request to the server. Server is going to server is going to process on that request, and server is going to generate some data, and it is sending me something called as a response. Try to understand. So यहाँ पर क्या होगा, you people are going to send a request. You are going to send some request. So ये request इधर आ जाएगा, आपके क्लाइंट से आपको क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा. ओके, और आपका सर्वर क्या करने वाला है, आपका सर्वर इज गोइंग टू जनरेट समथिंग कॉल्ड एज रिस्पॉन्स. सो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिस्पॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू यूर रिक्वेस्ट. सो ये बेसिक लेवल का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है. सो क्लाइंट एंड server, these are the two very important components through which we are able to do the communication. ये बेसिक लेवल का मैंने बताया, लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसे होता है, इंडस्ट्री में मतलब जो एपीआई हम पढ़ने वाले हैं उसका कैसे होता है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये है आपका क्लाइंट, ये हो गया आपका लेट्स से सर्वर, और एक और कंपोनेंट होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं डेटाबेस सर्वर. सो ये बन गया आपका क्लाइंट, ये बन गया आपका सर्वर. फॉर द टाइम बिंग विल कॉल इट एज सर्वर, एंड ये बन गया आपका डेटाबेस सर्वर. नाउ गाइज व्हाट इज हैपनिंग, लिसन नाउ वेरी केयरफुली. What you people are going to do as a end user, you are sending the request. As a end user you are going to send the request. Now what this server contains, try to understand it guys, what this server contains. The server contains something called as, ये चीज याद रखो, server contains something called as, देखो what you did, you send the request, है ना, आपने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजा. क्या रिक्वेस्ट भेजा, एक रिक्वेस्ट भेजा https://www.http www.google.co.in. सो ये रिक्वेस्ट आपने भेजा. नाउ how server is going to serve this request, so this server is having something already defined, or already there is some code. That code will identify how to serve this request, and that code is known as business logic. Okay. That code is known as business logic. So ये business logic क्या करेगा, the business logic will serve on that particular, ये normally code है, using any one of the programming technology ये एक code बनेगा. Now obviously it is expected that sometimes you people may fetch some you people need to send some data to the database, and sometimes you people need to fetch some data from the database server. ये तो कॉमन सी चीज है कि you are going to send some data to the database server, and again vice versa you are going to
retry some data from the database server. Database server का एक ही role है कि it is going to store that data. Now once you are okay, if required, it will fetch, server will fetch the data from database server. Now once your request is processed through this business logic, then what is happening? What is happening now? Now it will generate the server. The server will generate something called as a response. आपका सर्वर क्या जनरेट कर रहा है? सो आपका सर्वर जनरेट कर रहा है समथिंग कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स. सो आपका सर्वर जनरेट क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स. एक बार फिर से मैं पूरा का पूरा डायग्राम थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. सो व्हाट इज हैपनिंग? क्लाइंट इज गोइंग टू पास द रिक्वेस्ट टू द सर्वर. सो आपने क्या किया? आपने एक रिक्वेस्ट पास किया ये वाले सर्वर को. ओके, जनरली इसको हम वेब सर्वर भी बोलते हैं, राइट? सो क्लाइंट पास द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर इज क्या बोलते हैं उसको, ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू सर्व दैट रिक्वेस्ट. सो सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल कि इसके ऊपर क्या करना है, हाउ टू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट. इसके लिए सर्वर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल कि हाउ टू सर्व दैट रिक्वेस्ट. नाउ हाउ सर्वर इज गोइंग टू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट? सो मैंने अभी ये 3-4 बार बोला कि सर्वर इज गोइंग टू प्रोसेस ऑन दैट रिक्वेस्ट, सर्वर इज गोइंग टू सर्व दैट रिक्वेस्ट. लेकिन ये होता कैसे है? ये कैसे होता है? सो फर्स्ट यू पीपल नीड टू वैलिडेट दैट रिक्वेस्ट. सो जो भी रिक्वेस्ट आपने भेजी, सो आपने एक रिक्वेस्ट क्या भेजी? https://www.google.co.in. ये रिक्वेस्ट आपने भेजी. नाउ द फर्स्ट टास्क ऑफ सर्वर इज गोइंग टू वैलिडेट दैट रिक्वेस्ट. अब ये वैलिडेट कैसे करेगा? समटाइम्स इट विल फेच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस. इन दैट केस ये भी हो सकता है. ओके, सो सबसे पहला काम तो क्या करेगा? यूजिंग दैट वेब सर्वर, ये सबसे पहला काम तो ये होगा कि सर्वर विल वैलिडेट दैट रिक्वेस्ट. नाउ आफ्टर वैलिडेटिंग द रिक्वेस्ट, इट इज पास्ड टू द डेटाबेस सर्वर. It is passed to the database server, and from the database server you will be getting that data, and using that data now you will get something called as that response. Let me explain it once again. So you people as a client, you are sending the request for a particular API or whatever. सर्वर इज गोइंग टू फर्स्ट वैलिडेट दैट रिक्वेस्ट. तो सबसे पहला काम सर्वर क्या करेगा? whatever रिक्वेस्ट यू आर सेंडिंग, सबसे पहला काम जो आपका सर्वर आपका सर्वर करेगा वो है दैट इज वैलिडेशन. सो सर्वर सबसे पहला काम क्या करने वाला है? सो इट इज गोइंग टू वैलिडेट दैट रिक्वेस्ट. Then that request is transferred to the database server. Database server is going to generate, or we can say send the related or required data, and it will generate something called as response, and now that response is sent to the client. So here are two very important keywords that we people need to understand. One is the request and one is the response. Now the main point, मैंने अभी 2-3 बार बोला कि your server is going to validate this request. तो validate कैसे होता है? You are going to send the request. So आपने एक request भेजा. So how this server is going to validate that request? What happens behind the screen? कैसे होता है ये validation? So basically there is one business logic जो मैंने बोला था ना. So there is one business logic, and this business logic is developed by some developer using any one of the technology.
the technology which is related to that developer using that particular technology, वो बंदा क्या कर रहा है, उसका एक बिजनेस लॉजिक बना रहा है. सो यहाँ पर डेवलपर का रोल क्या हो गया. सो डेवलपर का एक रोल होता है कि व्हेनेवर आपको कोई रिक्वेस्ट आती है, सो दैट रिक्वेस्ट विल बी पास टू द बिजनेस लॉजिक. हियर बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, जो भी डेवलपर ने स्क्रिप्ट लिखा है, बिकॉज ऑफ दैट स्क्रिप्ट सर्वर क्या करेगा, सर्वर विल वैलिडेट दैट रिक्वेस्ट वेदर दैट रिक्वेस्ट इज वैलिड और नॉट. सो डेवलपर का इसमें रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रोल ऑफ डेवलपर. सो डेवलपर हैज टू राइट द बिजनेस लॉजिक. ये डेवलपर का रोल है. डेवलपर का रोल है कि डेवलपर हैज टू राइट द बिजनेस लॉजिक टू वैलिडेट दिस रिक्वेस्ट फर्स्ट, टू सर्व दैट रिक्वेस्ट. उसके ऊपर क्या कर रहा है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट. सो एक चीज याद रखो कि अनलेस एंड अनटिल द request is not valid, that would not be served, that would not be validated. Sorry, that would not be served, validated नहीं. If the request is not valid, उसके ऊपर तो कुछ काम होगा ही नहीं. Okay. So if the क्या बोल रहा था मैं, if the request is valid, then only the request will be sent to the database server, and then from the database server getting that data, you will get the response. So this is the main part that majorly works in the client server architecture. Is it okay guys? ये इतना पार्ट समझ में आ गया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है. If you are having any query, as usual, feel free to ask me. I know it's very critical part.